हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जो मैंने भी लाइव रे जॉइन हो जल्दी जल्दी शेयर कर दियो और लाइक कर दियो वीडियो को। टिके व्यूअर्स बढ़िले सांगे सांगे क्वेश्चन स्टार्ट आमे करबा। जेते जण भी अछो फटाफट लाइक कर दियो लाइव स्ट्रीम टाकू और शेयर कर दियो एंड वी विल स्टार्ट नाउ। देवाशीष गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी जेते जाए लाइक्स बढ़िबनी शेयर हबो नाही सते जाए क्वेश्चंस स्टार्ट हबो नाही। फटाफट शेयर मार की यस बोली पकाओ कमेंट सेक्शन में यस शेयर्ड एंड वी विल स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस। गुड इवनिंग साइना, गुड इवनिंग प्रजना, गुड इवनिंग समस्त को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग नलिनी, उत्कलिनी सतपथी गुड इवनिंग समस्त को वेलकम। 20 कंकरेंट व्यूअर्स 15 लाइक्स फटाफट लाइक मार दियो पिले एंड आई विल स्टार्ट द क्वेश्चंस नाउ in a minute. Okay, before starting the class गोटे पॉजिटिव लाइन रू स्टार्ट करिया, गोटे पॉजिटिव मंत्र रू स्टार्ट करिया। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकामिव वंदनात् मृत्युर्मुक्षयमृतत्। हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ, वेलकम टू विद्यासागर क्लासेस। आउ गोटे लाइव सेशन को समस्त को वेलकम स्वागतम। समस्ते हाजरा पकई दियो। बढ़िया सांघातिक पॉलिटी क्वेश्चंस ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। फटाफट समस्त को प्रणाम, समस्त को अ वेरी गुड इवनिंग। ओके स्टार्ट करियो सेशन। स्वागतम, हेलो प्रणाम निरुपमा। शैल वी स्टार्ट यस और नो? समस्त रेडी? स्टार्ट करिवा संगे संग। चलो जिते जन भी अच्छो टिके लाइक कर दियो वीडियो टाकू। आज अधिक रु अधिक व्यूअर्स आनिया को हमें ट्राई करिवा। आज बहुत सारा जिंस कहबार अच्छे, बहुत सारा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मध्य करिवार अच्छे। रेडी? चलो द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट भारी बेसिक क्वेश्चन से हमें जीवा, धीरे धीरे लेवल तार बढ़ेबा। ओके, व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स सहित को पार्ट डील करुच? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ना पार्ट 4? श्री गुड इवनिंग जय जगन्नाथ। 40 टा व्यूअर्स 27 टा लाइक जमा भल न, बहुत बड़ी ना इंसाफी है। सांगे सांगे लाइक कर दियो पिले, जितने जन भी अच्छो लाइक करो। दैट वुड बी द बेस्ट रिवॉर्ड फॉर दिस वीडियो। चलो वेरी गुड। पार्ट 3 रे पिले फंडामेंटल राइट्स विषय रे देइची। इट टॉक्स अबाउट फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 1 टॉक्स अबाउट यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। Part 2 talks about citizenship and part 4 talks about DPSP. ठीक अछि, सबु पार्ट विषय टिके ओवरऑल आइडिया रखिबो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर करेंटली रिकॉग्नाइज्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? केतेटा फंडामेंटल राइट्स को करेंटली हमें रिकॉग्नाइज करूछु इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जल्दी 5टा 6टा 7टा ना 8टा? कौन होगा करेक्ट आंसर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सहज गुलुगुला क्वेश्चन उडा सब। ये सब होची गुलुगुला क्वेश्चन, फटाफट हबो, धड़ा धड़ हबो। बट क्वेश्चन लेवल ठीक 10टा क्वेश्चन पर बढ़िया स्टार्ट हबो हला। करेक्ट आंसर विल बी 6 बिफोर इट वाज 7। हां करेंटली रिकॉग्नाइज पचारची, सो 6टा हला। 6टा कौन कौन? इक्वालिटी, तापर कौन? फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आ कौन? जल्दी जल्दी कही चलो गोटे हला इक्वालिटी हला, इक्वालिटी राइट टू इक्वालिटी, तापरे राइट टू फ्रीडम, तापरे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हला, तापरे फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तापरे कल्चरल राइट्स, तापरे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हला। वेरी गुड, नेक्स्ट जीवा पिले। Next question, 3 number question, which of the following is not a fundamental right in India? कोटा इंडिया रो fundamental right नुह? कौन कौन देइची? right to equality, right to education, right to strike ना right to remain silent? कौन होगा करेक्ट आंसर? जल्दी जल्दी कहि दलो फटाफट, गारे दियो, उड़े दियो सही सही। कौन होगा पिले? कौन होगा आर करेक्ट आंसर? राइट टू स्ट्राइक करि परिबा नाही बोली कहउछ। कोटा फंडामेंटल राइट हमरो नुह?
कोटा हमर फंडामेंटल राइट नुह वेरी गुड right to remain silent is the fundamental right right to remain silent is a fundamental right tale answer kon haba right to strike is not a fundamental right बुझी पारलो right to strike is not a fundamental right एटा हमर right नाही right to equality अछि right to education अछि और article 19 रे right to remain silent मध्य हम पाखरे अछि not yes not पचारछि not टाको इग्नोर करियो माने दब के ना तळे गळी पड़िबो not टाको इग्नोर करियो नै बुझि पाइलो नेक्स्ट 4 number question the right to freedom of religion is guaranteed under which articles of Indian constitution को articles रे freedom of religion विषय कहि छी simple सरल question को articles रे freedom of religion विषय पिले कहा जाय छी जल्दी जल्दी फटाफट ताली मारी के आंसर दे दियो कोन हबो 50 concurrent viewers जो 50 टा पिला अछो जल्दी जल्दी लाइक कर दियो वीडियो को लाइक करले रीच पहुंचीबो बुझ पारलो ए माछ आट वाला 4-5 थर म कहि सालिनी ऑलरेडी आ पर पूरा खसिस हबो तम माने खसिस करेक्ट आंसर होची आर्टिकल 25 रु आर्टिकल 28 आर्टिकल 25 रु आर्टिकल 28 भितरे फ्रीडम ऑफ रिलीजन विषय देइछ 5 नंबर जिबा ओके ता पूर्वडा किछि बुझला वाला जिंस ओके आर्टिकल 12 रु आर्टिकल 15 एडा नुह एडा हबो नाही आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ द स्टेट कहूची आर्टिकल 13 कोन कहूची आर्टिकल 13 कहूचे ऑल द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट हैज टू फॉलो द फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 होची इक्वालिटी बिफोर द लॉ 15 हला प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हला 19 रु 22 राइट टू फ्रीडम विषय जाउची 30 हला हमरो राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज आ 32 हला कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी सो रहिला कोन आर्टिकल 25 रु 28 हला नेक्स्ट 5 नंबर which fundamental right ensures the prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth ko article kohuchi these discrimination there should not be any kind of discrimination on these grounds hello jai jagannath jaldi right to equality okay ready the correct answer will be right to equality article 15 right to equality article 15 again right to freedom हमर को आर्टिकल भीतर देइछि आर्टिकल 19 रु आर्टिकल 22 मध्ये रे right to education देइछि आर्टिकल 21 ए मध्ये रे and right to constitutional remedy देइछि आर्टिकल 32 ओके ए आर्टिकल ओडा बहुत इंपोर्टेंट रिपीटेडली क्वेश्चन रे आसीछि the right to constitutional remedy allows citizens to कोन हबो कोन पचाछि right to constitutional remedy allows the citizens to कोन अलाउ करे citizens को क्वेश्चन देखि कि भलो से आंसर दियो कौन अलाउ करे सिटीजन्स मान को फटाफट पिले निरुपमा ए ओके बहुत बढ़िया चलो मारी चलो रुहा रुई नहीं संगे संगे आंसर ऑन स्पॉट आंसर उड़ाओ सुशील रियल रश्मि सोनाली प्रज्ञा तपन भाग्यश्री कौन कल तुम माने पूरा निया लगे दलो घर भीतर निया लगे दलो राजू पटनायक आई एम वेरी गुड राजू थैंक यू श्री ए समस्तंगर ए सॉरी गला मिची मिची का क्वेश्चन पढ़िच कौन देइछ ऑप्शन रे अप्रोच डायरेक्टली ओनली द सुप्रीम कोर्ट कौन केवल सुप्रीम कोर्ट पाखु को ही जाई परिबा फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करिया पई ना 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 नो द करेक्ट आंसर विल बी कौन हबा अप्रोच डायरेक्टली ओनली द सुप्रीम कोर्ट सेटा हबो नाही डिमांड अ रेफरेंडम एटा केबे भी नुह चैलेंज एनी लॉ इन द पार्लियामेंट आर्टिकल 32 कहू नाही रहिला कोन नोटा नॉन ऑफ द अबव कांग्रेचुलेशंस आपके साथ प्रैंक हुआ है नोटा नन ऑफ द अबव हला नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा पले नेक्स्ट क्वेश्चन हला which article in the Indian constitution is known as the heart and soul of the constitution को आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाए प्रज्ञा परमिता महापात्र बट रेमेडीज 32 ओनली सुप्रीम कोर्ट हबो क्वेश्चन देखो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी एठी मो आर्टिकल 32 बोली मेंशन करी नाही एठी कोन देछि अप्रोच डायरेक्टली ओनली द सुप्रीम कोर्ट हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32 रे सुप्रीम कोर्ट पाखु को जाई परिबा आर्टिकल 226 रे हाई कोर्ट पाखु को मध्य जाई परिबा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी डिमांड करिया को किंतु मोडी आर्टिकल 32 बोली मेंशन करी नाही मु खाली कहिछि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी पई कोठी की जाई हबो हला ना ना डोंट अज्यूम दैट प्रज्ञा रेमेडीज माने आर्टिकल 32 तमे अज्यूम करो नाही डू नॉट अज्यूम दैट
तुमको जदि पचरा हला कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी पई कोठी जाई पारे सुप्रीम कोर्ट को केवल जाई परिबनी यू कैन आल्सो गो टू द हाई कोर्ट हला डू नॉट अज्यूम दैट ओके एटा हबो आर्टिकल 32 व्हिच इज कॉल्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हला राजू पटनायक मोर आंसर देखु ना सर देखुची समस्त आंसर देखुची हला नेक्स्ट बा 8 number question. The right to education which provides free and compulsory education for children aged 6 to 14 was added to the constitution by which amendment? को amendment द्वारा compulsory education for 6 to 14 years was added? जल्दी फटाफट ये सब जिंस धीरे धीरे आंसर दबार किछ नाही फटाफट आंसर दे उडे की छिंचत्र कर दियो रुआ रुआ वेडी नाही बहुत बढ़िया अल्लाह प्रकार यस द करेक्ट आंसर हबो 86th amendment of 2002 86th amendment of 2002 द्वारा आमे compulsory education add करिसंती in the fundamental rights okay next 9 number question under the right to freedom of speech and expression restrictions can be imposed on which of the following grounds को grounds रे freedom of speech and expression ऊपर हमें restriction को impose करि परिबा article 19 कहूची कि हमें restriction impose करि परिबा freedom of speech and expression रे but को ground से करि हबो which are the grounds जो grounds हमें restriction impose करि परिबा फटाफट जल्दी जल्दी कौन हबो को ग्राउंड से करियो पिले बहुत बढ़िया कौन हमर 45 कॉन्करेंट व्यूअर्स से कोन पे अटकी होले हमें एटा बढ़ुनी कोन भाई शेयर करिचो समझते हैव यू ऑल शेयर्ड द वीडियो शेयर करछो ना नहीं पिले ओ पिले पिले माने हैव यू शेयर्ड द वीडियो यस और नो अरे शेयर करछ ना यस हरप्रिया सर आम ग्रुप रे तो पिला सब आछंती बहुत खुशीर कथा कि आम ग्रुप रे पिला माने सब आछंती ओके नेक्स्ट सो इट हैव ऑल ऑफ द अबव आमे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रे चैलेंज करि परिबा रेस्ट्रिक्ट करि परिबा डिफेमेशन गोटे रेस्ट्रिक्शन पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करिया पई मध्ये रेस्ट्रिक्शन इंपोज करि परिबा सो रेस्ट्रिक्शंस कैन बी इंपोज्ड ऑन ऑल ऑफ द अबव 10 ओके पिला आमर आउ थे कहीदे ओएसटीटी रो नुआ बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गलानी जो मैंने एबे जाए भी बसिकी भावुच कि मते ओएसटीटी रो क्लास नबार अच्छे ना नहीं जो मैंने भावुच नेबी ना नहीं सेही मानक पई बेसी आ भाव नहीं बेस्ट इन क्लास फैकल्टीज को पाखरु बेस्ट इन क्लास कोचिंग तुमको एही प्राइस लेवल रे कोठी मिलिबो नाही हला बिफोर थिंकिंग एते न भाबी न चिंता करिकी जल्दी जल्दी कोर्स परचेज करिनियो बेस्ट इन क्लास फैकल्टीज मानक सीरीज तुम आगे अछि समस्ते 1-to-1 गोटे ऊपर गोटे फैकल्टी पूरा अच्छी सब सब्जेक्ट पे डेडिकेटेड फैकल्टीज प्रिलिम्स प्लस मेन दीटा जगह पे क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हे गले तो जो माने नबा को चाहूच एबे ही एनरोल हुआ आ सुनो जदि आम सहित कथा हबार अछि मो सहित पर्सनली कथा हबार अछि कि को भी फैकल्टी माने सहित कथा हबार अछि कोन करिवो गूगल फॉर्म रे डिस्क्रिप्शन रे गूगल फॉर्म अछि गूगल फॉर्म फिल अप करो आज एबे क्लास सरू गूगल फॉर्म फिल अप करिवो तमे जेंति गोटे सेगमेंट रे आसी जिवो कि हां गोटे पिला इंटरेस्टेड अछि तमे सहित हम कथा ही परिवो जदि मो सहित कथा हबार अछि गूगल फॉर्म फिल अप करिवो जे भी तुमको कॉल करिवे जस्ट आस्क देम कि प्रिय संग सहित कथा हबार अछि गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन रे अछि ताको फिल अप करि दियो आ बेसी न भाबी चिंती एबे ही कोर्स परचेज करो जो माने करिवा कथा भाबुचो हला नेक्स्ट बा व्हिच फंडामेंटल राइट वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट बाय 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को फंडामेंटल राइट को रिमूव करा हाइची बाय द 44th अमेंडमेंट जल्दी फटाफट करेक्ट आंसर विल बी right to property. Right to property was the fundamental right to Article 31A under thila, and that was removed by the 44th amendment of 1978. Case aitila Keshav Nanda Bharti case jodi fundamental rights of violation kotha uthithila, and there in that landmark case Supreme Court removed Article 31A from the Constitution. Ebe Article 300A hisabre achi as a legal right, gote legal right hisabre add heki achi. Correct? Next 11 number question. Which of the following is not a fundamental right? Which of the following is not a fundamental right? Jaldi fatafat. Kota fundamental right nuha. Article 19(1) clause G, Article 19(1) subclause E, Article 19(1) subclause F, na Article 19(1) subclause D. कौन होगा correct answer? कौन होगा जल्दी पिले? What will be the correct answer? कोड़ा correct answer होगा जो माने class करी चंती
से माने ये आंसर को एमिति देबे एबे एबे जो एलटीआर क्लास सब चलची जो माने से क्लास करी छंती आराम से आंसर देबे कोन हो करेक्ट आंसर ओके ओके दयानिधि तपन शिल्पा तपस्विनी प्रज्ञा रमेश बहुत बढ़िया फैंटास्टिक द करेक्ट आंसर विल बी आर्टिकल 19(1) क्लॉज F is not a fundamental right काहे ना एटा रिमूव हेई जाई छी हला हम आर्टिकल 19(1) रे केतेटा राइट्स जाउची 6टा राइट्स कोन कोन समर्प S A A M R and P समर्प समर्प कोन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ असेंबली फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हला फ्रीडम ऑफ मूवमेंट फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन ठीक अछि एटा A B C D E and G F टा अगरु प्रॉपर्टी थिला to hold and dispose property but सेटा remove करा है जाइची by the 44th amendment of 1978 बुझि पाल्लो सो ई सब क्लॉज गुडा मने रखिबो सब क्लॉज ऊपर जेमिति हेले क्वेश्चन आसीबो सो आर्टिकल 19(1) क्लॉज G कोन कहूची फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन तमे प्रोफेशन पई फ्रीडम अछि आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज E कोन कहूची फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज D कहूची कोन कोन कहूची फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ओके मिडिल क्लास व्लॉग्स हेलो गुड इवनिंग चलो फटाफट 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 नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूची टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस इज अ वेरी इंपोर्टेंट कॉन्सिक्वेंस अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस हला रीजनेबलनेस रो टेस्ट को आर्टिकल अंडर रे बहुत इंपोर्टेंट रीजनेबलनेस माने कोन जदी गोटे माने कोन लॉ अना जाउची बा गोटे एक्टिविटी अछि तार रीजनेबिलिटी तार वैलिडिटी चेक करियबा को आर्टिकल अंडर रे अप्लाई करूची आर्टिकल 13 आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 ना आर्टिकल 16 कोन हो करेक्ट आंसर टेस्ट ऑफ reasonableness जल्दी लिपिले is very important consequence under which of the following articles taste of reasonableness 55 concurrent viewers किंतु 46 likes सांघातिक अति मधुर पिले कौन हो करेक्ट आंसर टेस्ट ऑफ reasonableness the correct answer will be article 13 हैला reasonableness कौन पाई जहां भी laws बना जाउची has to follow the fundamental rights it has to be reasonable सेति पाई article 13 okay 13 number question permanent laws are issued by the permanent laws किए issue करे president parliament central government ना supreme court जल्दी permanent laws किए introduce करे जल्दी को answer who introduces permanent laws yes the correct answer will be उड़िला रे तमनकर उड़िला पूरा आज करेक्ट आंसर कौन होगा वेरी गुड द करेक्ट आंसर विल बी पार्लियामेंट जोड़ा आर्टिकल 79 अंडर देइची एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक परमानेंट लॉज ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूची नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत किछि कहूची ऑड वन आउट रॉन्गली मैच्ड कोटा रॉन्गली मैच्ड अछि आर्टिकल 25 से देइची guarantees the freedom of profession practice propagation of religion to all citizens article 26 देइची it guarantees the freedom to manage religious affairs article 27 देइची it guarantees freedom as to payment of taxes for promotion of religion d होची none of the above कोटा wrongly matched पिले आ भितरु कोटा wrongly match हिची that is the answer कोन हो करेक्ट आंसर वाह अति सुंदर चमत्कार भाव रे तमने आंसर दे दैछ कोन हो करेक्ट आंसर पिले बी सी ओके करेक्ट आंसर विल बी none of the above सबुतक करेक्टली मैच्ड अछि सबुतक करेक्टली मैच्ड अछि आर्टिकल 25 रे फ्रीडम ऑफ रिलीजन विषय कहूची आर्टिकल 26 रे हमर गारंटीज फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स एटा भी अछि आर्टिकल 27 फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस एटा करेक्ट आंसर हो नन ऑफ द अबव बा नोटा पिले करेक्ट आंसर हो नोटा नेक्स्ट जीवा 15 नंबर क्वेश्चन freedom to live with human dignity is enshrined in which article freedom to live with human dignity सहित रहिबा को आर्टिकल ले लिखा जाईची आर्टिकल 19 20 21 ना 22 कोन करेक्ट आंसर सेटा देखि फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस हुएनी
Freedom from payment of taxes. The correct answer will be Article 21. Article 21 कहूची कि we can live with human dignity. Human dignity सहित आमे बंची पारिबा, बंचीबार अधिकार. 16 number question. Which of the following is a non-justiciable right? Which of the following is a non-justiciable right? कोटा गोटे non-justiciable right पिले. Right to adequate livelihood, right against exploitation, right of accused, right to equality. कौन होगा correct answer? जल्दी, फटाफट. आर के बारिक, शायना, भाग्यश्री, साई शुभश्री, विकास, मिस्टर साई, कितने साई गिरे, श्री, अनुराधा. The correct answer will be okay. Yes, the correct answer will be right to adequate livelihood. This is a DPSP. Our DPSP is not legally enforceable. So correct answer about A. Right against exploitation achi, right of accused achi, Article 22 and 20. Our right to equality madhya am bagare achi. Next, 17. Right to freedom of conscience is guaranteed under which article? Freedom of conscience को article under रे देइछ. Freedom of conscience हमारो को article under रे देइछ. फटाफट. इधर मो top 5 नेबी. Top 5. चलो फटाफट top 5. Freedom of conscience को article under रे देइछ. आर के बारिक. Okay. भाग्यश्री, अनुराधा, सोनाली, प्रज्ञा परमिता. Top 5 हे गले. The correct answer will be अरे फसी गले रे. Article 25 freedom of religion, Article 25 रु Article 28 मध्य रे. अब Article 25 रे ही सबु तक freedom of religion देइछि. Freedom of conscience, freedom to profess, freedom to practice and freedom to propagate. हला. Next, which article provides protection against double jeopardy? Double jeopardy against को article protection provide करूछि. Which article provides protection against double jeopardy? Jolly. माने one cannot get punishment for the same crime again and again. Double थरो same crime पे punishment पाई परिबो नहीं. कौन होगा correct answer? The correct answer will be Article 20. Yes, protection in case of conviction of offense. Correct answer कौन? Article 20 जोड़ा कहा जाए protection in case of conviction in offense. Hala. Next question jiba. 19 number question. Which article prohibits devadashis? को article devadashis को prohibit करूची पहले. devadashis बा forced labor को article prohibit करूची. जल्दी फटाफट. Which article prohibits devadashis? Correct answer will be Article 23 जोड़ा कि right against exploitation under रे जाउची. Forced labor, beggar, prostitution, devadashis are banned under Article 23. हला. Next जिबा. हला. Before going to the next question पहले जो माने फ्री रे किछटा वीडियोस देखिया को चाहूछ पेड क्लासेस जोगडा तार पकापाकी 15 to 20 classes are freely available on the Bidyasagar Classes app. तमे से ऐप टा जदि डाउनलोड करिवो तम नंबर देकी गोटे ओटीपी आसीबो लॉगिन करि दबो एंड पकापाकी 20 पेड क्लासेस आर फॉर फ्रीली अवेलेबल अछि. पॉलिटी अछि, रीजनिंग अछि, साइंस रो पार्ट अछि, सब जिंस पकापाकी 20 टा क्लासेस फ्री रे पडिछि ऐप रे. तमे बस खाली लॉगिन करियार अछि. प्ले स्टोर को जाई कि विद्यासागर क्लासेस ऐप डाउनलोड करिवो, लॉगिन करिवो. 20 टा जो एबे क्लास सब चलछि तार 20 टा क्लास सेठी तुमको अवेलेबल हेइ जिवो. हला. आउ ता छडा जदि हम सहित इंटरैक्ट करिवार अछि रिपीटेडली कहूछि गूगल फॉर्म fill up करो or else you are going to miss an opportunity. Hala. Next jiba. 20 number. Which of the following statements is true regarding right to information under the fundamental rights? हमर जो right to information अछि fundamental rights under Article 19 under रे ता regarding कोटा true statement बोली पछारिछि. कहबा RTI is explicitly mentioned as a separate fundamental right in the Indian Constitution. RTI is recognized as part of the right to freedom of speech and expression. RTI is covered under the directive principle of state policy. RTI is applicable only to the government owned organization. आ भितरु कोटा correct हबो पले. Which one will be correct?
जल्दी जल्दी उड़ाओ फटाफट which of the following statements is true पचारिछि which of the following statements is true कौन बा very good शाबाश उड्डेल त माने correct answer will be B. RTI is recognized as a part of freedom of speech and expression under Article 19(1) subclause A. 80 right to property विषय पिले दिया जाइछि हला नेक्स्ट बा 21 under which subclause of Article 19(1) the right to freedom of speech and expression is granted एटा पूरा सहज क्वेश्चन ता संगे से आंसर आसीबो जल्दी जल्दी आंसर दियो फटाफट को सबक्लॉज अंडर रे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विषय कुआ जाइछि टॉप 5 पिलाइडी नबी टॉप 5 चलो Mr. Sai, Sonali, Shaina, Bhagyashree and Rohit. Very good. The correct answer will be Article 19(1) subclause A. Article 19(1) subclause A. बहुत बढ़िया. B तो हमें जानी चंती कौन? Assemble. C association. D हला कौन? Movement. हला. Next. 22. The right to assemble peacefully and without arms is given under which subclause? को subclause under रे right to assemble peacefully दिया जाइछ. Right to assemble peacefully. जल्दी जल्दी फटाफट दियो फटाफट आंसर 22 नंबर रा करेक्ट आंसर अब assemble peacefully. The correct answer will be Article 19(1) subclause B. Article 19(1) subclause B. Subclause B एटा अब B. C रे पिले association कथा कहिछि. C रे association कथा कहिछि. एडी assemble कथा कहिछि हला समर्प समर्पटा भूलो नहीं समर्प काहे की भूलुच फ्रीडम ऑफ स्पीच असेंबल एसोसिएशन मूवमेंट रेसिडेंस एंड प्रोफेशन A B C D E and G हला डोंट फॉरगेट दिस ओके नेक्स्ट बा 23 अगेन हाउ थरे कहि रखुची जो माने भी इंटरेस्टेड अछो फॉर्म फिल अप करो गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन रे दिया जाइछि जल्दी जल्दी जाके फिलअप करो आम सहित जदि कथा हबार अछि मो सहित कथा हबार अछि गूगल फॉर्म फिलअप करिकी रिक्वेस्ट करो कि प्रियव्रत सर कहिथिले गूगल फॉर्म फिलअप करिया को कॉल रे कथा कराओ हला नेक्स्ट बा आर्टिकल 19(1) सबक्लॉज C grants the right to which of the following freedom आर्टिकल 19(1) सबक्लॉज C रे कोन देइछि एटा भूल करिवनी समस्तकर ठीक हबा दरकार एवरीवन शुड गिव द करेक्ट आंसर आर्टिकल 19(1) सबक्लॉज C जल्दी फटाफट एटा जार भूल हबो आंजुलाय पानी आनिबो नाक भितर देकी सुसाइड कर दियो बिकॉज़ एटा तीन थर कहि सालेनी एबे कोन हबो आई होप एटा भूल करिवनी एटा भूल न हबा दरकार द करेक्ट आंसर विल बी आर्टिकल 19(1) सबक्लॉज C फॉर्म एसोसिएशंस फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस बहुत बढ़िया फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस रोहित आंजुलाय पानी नेक्स्ट बा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 right to move freely throughout the territory of India को आर्टिकल ले देइछ right to move freely आ ऊपर बहुत क्वेश्चन आसे पहले so take it as a revision right to move freely top 5 नबा top 5 जल्दी top 5 एटा जदि भूल हला सल्यूट सोनाली तपन रियल रश्मि प्रज्ञा रोहित ओके करेक्ट आंसर कौन हबो move freely माने फ्रीडम ऑफ मूवमेंट A B C and D so subclause D article 19(1) subclause D I hope you सब मन रहि जाउछ हमर next 25 which subclause provides the right to reside जल्दी फटाफट कहलो top 5 ने बाइडी top 5 residence रो कथा को subclause से देइछ residence रो कथा को subclause से देइछ जल्दी जल्दी रोहित सोनाली प्रज्ञा तपन भाग्यश्री बहुत बढ़िया top 5 रे आसी गला हमर right to reside जोटा हमर देइछे आर्टिकल E सी केडे B कहिछि D कहिछि अनुराधा पूरा आमी जे तुमार करी कि माने कहला मंजुलिका बाडेबो एथर मंजुलिका बाडेबो भूल भाल आंसर जो भला दउछ नेक्स्ट एडे E साइन न देखि यूरो साइन दिया आइछ अंडर आर्टिकल 19(1) क्लॉज G रे कोन देइछि फ्रीडम ऑफ profession and occupation हमारे freedom अछि to get indulge in any profession but indulge in any profession ता माने न जे गंजे व्यापार करिवो legal profession हला next 27 right against untouchability को आर्टिकल अंडर देइछि which article talks about untouchability right against untouchability is a crime it's a criminal law भी यार गोटे अछि article 17 talks about untouchability हला very good next बा 28
Article 921 guarantees the right to life and personal liberty to all individuals. Which of the following best describes the right? Kota sabutu best description douchi. It includes the right to privacy and livelihood. It is limited only to Indian citizens. It includes only the rights to physical security. It does not cover dignified life. Kaun hoba correct answer? Jaldi फटाफट पिले. Correct answer will be बहुत simple. सहज option नु जणा पड़छि A. It includes the right to privacy and livelihood. एटा तो केबे हबनी काना foreigners मानक पई बेटा available अछि. It includes the right to physical security केवल. No, mental security also. It does not cover dignified life. भूल कथा गोटे dignified life बंचिया पई ही right टा create करा है छला. Next 29. Under which subclause of Article 25 is the right to freedom of religion ensured, allowing individuals to freely practice, profess and propagate religion? जल्दी कहलो देखिबा. Practice, propagate, profess and propagate religion को article रे देइछ? Article 25, Article 25(2), Article 25(3) ना Article 25(4? कौन होगा correct answer? Practice, profess and propagate. कौन होगा पिले? The correct answer will be Article 25 clause 1. आर्टिकल देखो एडी तीनटा कथा कहिछि. प्रैक्टिस कथा कहूछि, प्रोफेस कथा कहिछि, प्रोपागेट भी कहिछि. एटा तीनटा डिफरेंट तमे 1 2 3 गणी कहछ सेटा हबो नाही. एडी आर्टिकल 25 क्लॉज 1 ही हबो हला. प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपागेट. एडी मु चाहिले कॉन्साइंस भी ऐड करि परिबी. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. The right to constitutional remedy is covered under which article, allowing individuals to seek enforcement of their fundamental rights? 8 तो 32 नहीं, so correct answer होगा article 226. Article 226 अंडर रे हमरो constitutional remedy हमें डिमांड करि परिबा हैला. 32 थिले 32 हेइ थांदा, बट जेहेतु 226 देइछि, correct answer will be 226 हाई कोर्ट को पाखरे. Next 31. Article 29 clause 1 provides the right to which of the following? को right एडी provide करूछि? Right to form association, right of minorities to conserve their language, script or culture, right to move freely throughout India, right to life and personal liberty. कौन होगा correct answer आ रहा? What will be the correct answer? जल्दी उड़ाओ. The correct answer will be yes, rights of minorities to conserve the language, script or culture. जोड़ा article 29 अंडर रे जाउची. and एटा केते नंबर fundamental right? केते नंबर fundamental right एटा? right against right of minorities केते नंबर? 5 नंबर हला. yes, very good. Next 32. In which, okay, एबे टिके cases ऊपर को question आसला पहले. In which landmark case did the Supreme Court hold that Parliament could amend fundamental rights to implement the directive principle of state policy? कोउतरे कुहा गला, कोउतरे सुप्रीम कोर्ट कहिले कि आमे फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करि परिबा टू इंप्लीमेंट डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करिया पई आमे फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करि परिबा. को केस रे कुहा गला? एडा कुहा गला हमरो केशव नंद भारती केस रे कुआ गला 1973. केशव नंद भारती केस ऑफ 1973 एइतरे कुआ गला कि यस डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करिया पई फंडामेंटल राइट्स को टिके लिमिट करि हबो हला. ए जो गोलकनाथ केस देछि एटा पले 1967 रो केस जोथरे सुप्रीम कोर्ट कहिथिले कि नो द फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी लिमिटेड. फंडामेंटल राइट्स को तमे लिमिट करि परिबो नाही हला. तापरे पले एटी हमरो मिनर्वा मिल्स केस हमर जो अछि एइतरे हमरो आर्टिकल 31 सी विषय रे कुआ जाउछि. आर्टिकल 31 सी कौन कहूँ कि आमर जो बेसिक स्ट्रक्चर तुम फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करिकी बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट करि परिबा नाही. आर्टिकल 31 सी बेसिकली कहिबा कथा बेले बेले लोकंकर वेलफेयर सोशल वेलफेयर पई किछिटा फंडामेंटल राइट्स वायलेट करि हबो. बट मिनर्वा मिल्स केस सुप्रीम कोर्ट कहिले फंडामेंटल राइट्स इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड यू कैन नॉट वायलेट इट. सो एटा आर्टिकल 31 सी सहित डील करूची. मेनका गांधी केस कोन पिले? मेनका गांधी केस केबे हेतिला? एथिरे हमर तीनटा आर्टिकल वायलेट हेतिला. गोटे हला आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 14. बेसिकली मेनका गांधी वाज अ जर्नलिस्ट हला. से गोटे जर्नलिस्ट थले एंड सी पासपोर्ट अप्लाई करथिले पासपोर्ट ऑफिस रे अंडर द पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1967 हला. पासपोर्ट अप्लाई करथिले. तांकर 1st of July 1976 से तांको पासपोर्ट इश्यू हला. पासपोर्ट ऑफिस तांकर पासपोर्ट इश्यू कला. गोटे वर्ष परे पाखापाखि 4th जुलाई एटा 1st जून ऑफ 1976 से तांको पासपोर्ट इश्यू हला. आ 4th
जुलाई 1947 ने तांका पाखु गोटे लेटर आसिला कि नो योर पासपोर्ट इज बीइंग इंपाउंडेड ड्यू टू सम रीजंस हला मेनका गांधी जे जर्नलिस्ट थिले बाहर को जीवा चाहूले से गोटे पासपोर्ट अप्लाई करते जोटा रिजेक्ट हो गला माने इश्यू कला परे वर्षे पर से कहले नो योर पासपोर्ट इज बीइंग इंपाउंडेड जे मेनका गांधी इंक्वायरी कले कि नो आई नीड टू नो द इन्फॉर्मेशन कोन पई इंपाउंड करूछ पासपोर्ट ऑफिस कहला अंडर द सेक्शन 10(3)(c) 10 सब क्लॉज 3(c) आमे तुमको कोनोसी इन्फॉर्मेशन देई परिबु नाही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पखरु गोटे लेटर आसला कि नो वी कैन नॉट प्रोवाइड यू एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन सो एठी केस हेतिला मेनका गांधी कहले मोर फंडामेंटल राइट को तमे वायलेट करूछ आर्टिकल 14 को तमे वायलेट कलो मोर राइट टू इक्वालिटी मिलु नाही इक्वालिटी बिफोर द लॉ मिलु नाही मोर आर्टिकल 19 वायलेट हला मोर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को तमे रेस्ट्रिक्ट करूछ एंड फाइनली आर्टिकल 21 बी टू लिव माय पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी सेटा मध्ये वायलेट हला मते कोनोसी प्रकार इन्फॉर्मेशन दिया गला नाही ऑल्दो ए केस रे सुप्रीम कोर्ट पासपोर्ट को नेकी किछि सेमति लैंडमार्क जजमेंट देले नाही कि पासपोर्ट फेरे दियो कि कोन पासपोर्ट ऑफिस पाखे रहिला बट से माने कहिले कि हमरो जो सुप्रीम कोर्ट कहिला कि तमर जो ए सेक्शन डा अछि पासपोर्ट एक्ट सेक्शन डा इट इज वेरी वायलेटेटिव हम फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करूची एंड इट हैज टू बी मॉडिफाइड बुझी पालो एटा थला मेनका गांधी केस नेक्स्ट बा Which of the following statements best describes the relation between fundamental rights and DPSP? Fundamental rights और DPSP भितरे कोटा best relation describe करा जाउची. Fundamental rights are enforceable in the court while directive principles are not. Directive principles have priority over fundamental rights. Both fundamental rights and directive principles are enforceable by the courts. तापर directive principles limit the scope of fundamental rights. Correct answer is clearly fundamental rights are enforceable in the court while directive principles are not. Hala. Next. 34. The 25th Amendment Act of 1971 added which provision to the Constitution to ensure that laws made to implement the directive principle of state policy could not be challenged on the grounds of violating fundamental rights? एडी दीटा प्रकार information मिलुची 25th Amendment Act of 1971 गोटे माने अमेंडमेंट ऐड करिथिला जोटा कहला जे जदि हम डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करिया पे कोनोसी लॉ आणुचू आ ता पय जदि कोनोसी फंडामेंटल राइट्स वायलेट होची ताले तमे सेडी क्वेश्चन करि परिबो नाही को जिनसटा इंट्रोड्यूस कराइतला को आर्टिकलटा इंट्रोड्यूस कराइतला आंसर अब आर्टिकल 31C हला आर्टिकल 31C कहूची जदि डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करिया पई बाटरे कोनोसी फंडामेंटल राइट वायलेट हे गला तमे से वायलेशन को क्वेश्चन करि परिबो नाही हला नेक्स्ट 35 In which case did the Supreme Court declare that the harmony between fundamental rights and DPSP is the basic structure? माने harmony maintain होबा दरकार हैला there has to be balance between fundamental rights and DPSP एटा को केस रे पिले कोहा जाइतला कहला देखिबा कोन हो करेक्ट आंसर कोन हबो yes Minerva Mills case Minerva Mills case रे कोहा गला कि there has to be a harmony between DPSP and fundamental rights एटा गोटे पिले एटा इलेक्शन को नेकी गोटे कॉन्फ्लिक्ट हेतला एटा सेति इंपोर्टेंट नुह बट इंपोर्टेंट एरिया हमर एई दिटा गोपालन केस एके गोपालन बेसिकली वाज अ कम्युनिस्ट पार्टी लीडर तांको 1947 रे पिले अरेस्ट करा हैतला हला ड्यू टू सम किछि से एमनी स्टेटमेंट दे दैथिले डेरोगेटरी स्टेटमेंट दैथिले जोटा तांको नेशनल सिक्योरिटी अगेंस्ट तांको अरेस्ट कराइला अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट हला तांको अरेस्ट करी कि रखा गला 3 वर्ष 4 वर्ष रिपीटेडली गोपालन हेबियस कॉर्पस रिट इशू करौथिले हेबियस कॉर्पस केस करौथिले तांको लॉयर द्वारा बट बार बार स्टेट गवर्नमेंट तांको हेबियस कॉर्पस को रिजेक्ट करथुला हाई कोर्ट हेबियस कॉर्पस को रिजेक्ट करथुला एंड रिपीटेडली तांको डिटेंशन बढ़ाउथुला से फाइनली सुप्रीम कोर्ट रे जाकी अपील करिथिले कि माइन फ्रीडम इज बीइंग वायलेटेड मोर आर्टिकल 19 वायलेट होची मोर एडी पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी वायलेट होची प्रिवेंटिव डिटेंशन ऊपर टिके क्वेश्चन होबा दरकार एटा थिला गोपालन केस शंकर प्रसाद केस रे पहले कौन हैला शंकर प्रसाद केस रे बेसिकली हमें कहिले कि सुप्रीम कोर्ट कहिला जो आर्टिकल 13 अछि जोड़ा कहूँ कि ऑल द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट हैज टू फॉलो द फंडामेंटल राइट्स सुप्रीम कोर्ट कहिला ए जो आर्टिकल 13 जो लॉ वर्ड ता अछि एटा केवल पार्लियामेंटरी लॉ कथा कहूची कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कथा कहू नाही बुझी पारलो माने आर्टिकल 13 को जतो इंटरप्रेट करा जिवो सेडी लॉ जो वर्ड ता अछि लॉ वर्ड को पार्लियामेंटरी लेजिस्लेशंस कहवा जिवो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बोली धरा जिवो नाही हैला नेक्स्ट 36 Which fundamental right is often seen in conflict with the directive principle that calls for promoting economic and social equality? कोटा सबु बेले एटा तो पिले हिजबो एटा right to property has always been conflicted सबु बेले conflict हिच right to property under article 31 हला next yes प्रज्ञा basic structure देइछि so हां Minerva Mills yes next 37
Which of the following fundamental duties under Article 51A of the Indian Constitution reflects Gandhian ideals? को fundamental duty टा Gandhian ideal एठी reflect करूची. Which fundamental duty reflects Gandhian ideal? कौन होगा correct answer? Gandhian ideal कोटा reflect करूची पहले Gandhian ideal को. पढ़ा बोल से option होड़ा. To develop scientific temper, to safeguard public property and abjure violence, to promote harmony and the spirit of common brotherhood, to uphold and protect the sovereignty and unity of the country. Correct answer कौन होगा? ना 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 रोहित तमे भूल आड़े जाउछ. गांधीयन प्रिंसिपल हमरो तमे डीपीएसपी कथा कहउछ. मु एठी पचाछि फंडामेंटल ड्यूटी रो को फंडामेंटल ड्यूटी टा गांधीयन प्रिंसिपल रिफ्लेक्ट करूछि. The correct answer will be 2. To safeguard public property and abjure violence. Violence अछि माने गांधी कथा गांधी महात्मा गांधी कथा कहवा गला. To कोन abjure माने कोन कहले prevent violence माने non violence कथा कहवा गला. और non violence रो सबुठ बड़ कर्ता धर्ता महारथी के महात्मा गांधी हला. B will be the correct answer. 38. Which of the following statements about fundamental duties are incorrect? कोटा fundamental duties बिसरे incorrect देइछि पिले. Which of the following नहीं श्री brotherhood कथाडी हबो नाही. That's not an ideal जोडा से कहिथिले. Mostly abjure violence हला सेटा तंगर ideal थिला. एटा कोन हबो correct answer? जल्दी फटाफट. Which of the following statements about fundamental duties is incorrect? Russian constitution USSR रो अना आइछि. That is correct. They can be enforced by a petition in the Supreme Court. एटा भूल. Supreme Court रा द्वारा enforce करी हेबो नाही. Those are non enforceable. Fundamental duties are non enforceable. ताको enforce करी हेबो नाही. सरला कथा. 39. The fundamental duty to protect and improve the environment under 51A subclause G can be associated with which DPSP? को DPSP सहित ताको हमें associate करी पारिबा. कोन हबो करेक्ट आंसर एटा? कोन हबो? Protect environment. एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कथा जोटा फंडामेंटल ड्यूटी रे देइछि डीपीएसपी रो को आर्टिकल सहित ताको हमें एसोसिएट करि परिबा. क्वेश्चन होजे सेडा कोन हबो? करेक्ट आंसर विल बी भाबी की को 39B बोले किछि डीपीएसपी अछि कि हमर 39A अछि. 39B बोले किछि नाही. 48A हबो. 48A talks about protection of environment. Article 40 talks about panchayat and Article 47 talks about 47 talks about public health and nutrition of people. So correct answer will be Article 48A which talks about environment. Hala. Next 40. What are the topics criticized by the directive principle of state policy? Directive principle को नेकी कौन criticisms अच्छी हला. First हला no legal sociologically arranged okay not legal sociologically arranged conservative conflicts and socialism. No legal force illogically arranged constitutional conflicts and legalism. No legal force illogically arranged conservative and constitutional conflicts. एटा वो correct answer. Legal force किछि नाही. Illogically arrange हेछि बहुत conservative किछिटा जिंसो आ constitutional conflicts बहुत अधिका हला. So correct answer हबो एटा. कोडा बुझा पड़नी 40 टा ये पचारुचे डीपीएसपी रो criticism कोन? डीपीएसपी रो क्रिटिसिजम्स कोन कोन एटा होची क्रिटिसिजम कि लीगल फोर्स किछि नाही इलॉजिकली अरेंज हेछि कंजर्वेटिव पॉलिसीज किछिटा अछि एंड कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत कॉन्फ्लिक्ट करूछेला. दीस आर सम ऑफ द क्रिटिसिजम्स ऑफ डीपीएसपी. व्हिच ऑफ द आर्टिकल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स गांधीयन प्रिंसिपल? गांधीयन प्रिंसिपल बिषय को आर्टिकल कहूछ जल्दी फटाफट पहले कहो. गांधीयन प्रिंसिपल बिषय को आर्टिकल्स कहूछ. Which articles talks about Gandhian principles? कौन होगा correct answer? Yes. So माने article 40 रू 48 भितरे. Article 40 रू 48 भितरे कौन कौन जाउची? 40 जाउची, 43 जाउची, हाँ ना नहीं? 43A जाउची, 43B जाउची, 46 जाउची, 43A, 43B, 46, 47, 48 ये सब जाउची Gandhian principle भितरे. Next, last 8 questions पहले. Which article states about uniform civil code throughout the country? Uniform civil code विषय को article कहूची. This is a repeated question बार बार आसुची सो तम माने भी मन रखिबा निहाती दरकार. Uniform civil code विषय को article कहूची. Article 44 and the first state to introduce uniform civil code is Uttarakhand. एटा मन रखिबा हला. Next 43. Which of the new DPSP was added to the constitution through 42nd amendment? 42nd amendment द्वारा को DPSP add करा जायछि. 42nd amendment द्वारा को डीपीएसपी ऐड कराइछ कहलो. 42nd amendment द्वारा को डीपीएसपी को ऐड कराइछ पिले कोन हबो? 43 रो करेक्ट आंसर होची
promote equal justice, to provide free legal aid, article 39A, article 39A. अरे इंटरनेशनल पीस रोहित 51 रे देइची, 51 ऐड हेइ नथिला, 51 थिला हला. करेक्ट आंसर हबो 1, to promote equal justice, to provide free legal aid, article 39A. 44, which amendment made elementary education for all children? Easy, 86th amendment of amendment article 21A. It have a correct answer. 4. Fourth will be the correct answer. 86th amendment article 21A द्वारा right to education, elementary education provide करा आइची. और को DPSP को implement करा आइची article 45 अंडर रे जो DPSP अच्छी सेटा को implement करा आइची. हैला. Next बा 45. हाँ. Hello. Class Bidyasagar. Road. Which of the following is are included in the directive principle of state policy? कोटा directive principle of state policy रे included अच्छी पिले. जल्दी. Prohibition of traffic in human beings and forced laborers. Prohibition of consumption of intoxicating drinks and other drugs. कोटा DPSP रे included अच्छी. Correct answer है only 2. कहीं ना इटा तो fundamental right भीतरे जाऊँची. So correct answer is वो कौन? B. 2 only. 2 only. 46. 46. Which of the following are included in the directive principle of state policy in the Constitution of India? कोटा DPSP add कराइची in Constitution of India to promote equal justice and to provide free legal aid to the poor, to make provision for just and human conditions of work and maternity relief, to protect monuments of national importance. Correct answer 1, 2, 3 हबो पिले. तीनटा को ही correct answer हबो. एटा भी अच्छी equal justice and free legal aid article 39A, to make provision for just and human condition of work, to protect the monuments of national importance. तीनटा जगह हबो all of the above. हला. Next 47. Article 43 of the DPSP states that Article 43 of the DPSP कौन कहूची? Article 43 of the DPSP कौन कहूची पिले? जल्दी फटाफट. Make provision for just and human conditions of work, secure a living wage, a decent standard of living with social and cultural opportunities, uniform civil code. Correct answer about secure living wage. Secure living wage. Wages bisare kohuchi. Article 43. Hala. Article 43. Next. Last 3 questions. 48. Generally, directive principles are negative directions, arbitrary actions, positive directions, prohibitive in nature. DPSP ର nature ପଚାରୁଛି. DPSP ର nature କଣ? Negative direction ରେ ଅଛି, arbitrary, random actions, ନା positive direction ରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ନା prohibitive direction ରେ ଅଛି. Correct answer कौन होगा? Positive direction. कहना welfare कथा कुआ जाउची, positivity हैला. Next 49. The Panchayat Raj institutions are established as per the constitutional direction of Panchayat Raj institution. कहा को फॉलो कराई कि इंप्लीमेंट करा जाइछि, कहा को फॉलो कराई कि इंप्लीमेंट करा जाइछि. क्लियरली डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, गांधीयन प्रिंसिपल, डीपीएसपी. आर्टिकल कौन? आर्टिकल 40. आर्टिकल 40. आ को पंचायत राज हमर को आर्टिकल अंडर देइछि? आर्टिकल 243 टू आर्टिकल 243 ओ. आर्टिकल 243 रु आर्टिकल 243 ओ मध्ये रे दिया जाइछि. बुझि पारलो? लास्ट. Match the following list of directive principles. List P and list R. एडा तुम पाई पिले task रहिला, homework रहिला. एडा comment section रे जणाइबो. This is a task. This is a homework for you. जदि करि न पारथिबो next class रे करिबा, किंतु समस्ते comment section रे निश्चित भाबरे करि कि जिवो. Comment section रे video end हला परे comment section निश्चित भाबरे करि कि जिवो. That's my time. That's top 50 questions from fundamental rights and DPSP. केमिति लागिला class? How was the class play? How was the class? जल्दी जल्दी कह दिलो क्लास केम लागिला. जल्दी जल्दी फटाफट. हाउ वाज द क्लास? कमेंट सेक्शन रे जणाइबो. एडी आंसर दियो नाही, कमेंट सेक्शन रे जणाइबो हला. ओके, बहुत बढ़िया, धन्यवाद पार्थवी. बॉम्बास्टिक. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट सेशन देखा थर्सडे दिन मोर आउ गोटे क्लास हम से करेंट अफेयर्स डिस्कशन करवा. जमी पॉलिटी गारेले करेंट अफेयर्स भी गारेबा, से भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन नहीं आसवा. वीडियो को शेयर करदब सांग सहित. टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय जगन्नाथ.